हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो सबसे पहले ये रेगुलर व्लॉग नहीं है. मेनी पीपल हैव बीन आस्किंग दैट टू एक्सप्लेन कैसे हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग फैट, प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं फोटो डाल दूंगा, टू बीइंग फिट विच इज राइट नाउ. आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फिट. सो या, हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग फैट, मतलब हाउ आई वेंट फ्रॉम हैविंग इतना बड़ा पेट टू नॉट हैविंग कुछ पेट नहीं है अभी. ओके. So yeah, how did I do that? So this will be the video explaining that. And sorry, I have not uploaded a YouTube video for the past 10 days. कुछ content नहीं था, honestly speaking. मैंने कुछ नहीं किया. It was a boring time. So yeah, so let's get right into it. How I went from being fat to fit. Explaining it in under a few minutes. Okay. So first off, when I was at my heaviest, I was 75 kgs. Okay, which is in this pic. I was 75 kgs. This happened during the first lockdown, that is March 2022. I just finished my 10th standard and I started gaining a lot of weight. घर पे था, I didn't know anything about workout का W भी नहीं मालूम था. मतलब I was a swimmer before, I had to quit, but वो छोड़ के I was not really into it. So I ended up gaining a lot of weight. बस बढ़ते गया weight. And from like 60 something, 65 ऐसा कुछ, I went to 75. I gained a lot of weight. Like इतना डबल चिंता, ना कितना बड़ा था. So yeah, I became fat. बहुत खाया भाई, बहुत खाया. सो वो हुआ. एंड देन फर्स्ट उसके बाद मैं मोटा हुआ. देन माई डैड पुश्ड मी टू स्टार्ट वर्किंग आउट बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग आउट फॉर द पास्ट लाइक 12-13 years. ही पुश्ड मी टू स्टार्ट वर्किंग आउट एंड मैं अपने टेरेस पे वर्कआउट करना चालू किया. सो टेरेस पे आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, बट कुछ नहीं करता था वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वैसे तो मैं कुछ नहीं करता था. चीजी राइट द ट्रांजिशन. बट या, क्योंकि आई कुड नॉट डू पुशअप्स, आई कुड नॉट डू पुलअप्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से एक पुशअप नहीं जाता था, एक पुलअप नहीं जाता था. स्क्वाट्स मतलब मैं ऐसे हाफ स्क्वाट्स मारता था, ऐसा दैट्स इट. दैट वाज माय रेंज ऑफ मोशन व्हाइल स्क्वाटिंग. सो या, मैं वैसे तो कुछ वर्कआउट कुछ करता नहीं था. आई स्टार्टेड विद डूइंग नी पुशअप्स एटसेट्रा. फास्ट फॉरवर्ड टू September 2020. अगेन दिस पिक इज फ्रॉम September 2020. डैम फैट एंड आई हेटेड माई सेल्फ. बहुत गंदा लगता था मुझे, गंदा इतना मोटा होना. मतलब खाते ही रहता था यार, समझ रहे हो. 75 kgs मतलब फॉर अ बॉय हु वाज ओनली 5 feet 4 inches 3 inches, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट. सो या, गंदा था यार. एंड सीइंग माई डैड सो डैम फिट, टच वुड, मैं बहुत खाता था. सो या, आई यूज्ड टू गेट जेलस. प्लस ही इज 50. ओके, so keep it in mind. Okay, तो वो हुआ. Then October 2020, right after this pic, I joined the gym. जब मैंने join किया, so again I did not know anything about how to work out. मुझे नहीं मालूम था. I did not know guys like Greg Doucette, Sean Nelvanich, Jeff Nippard, Saket Gokhale, Aryan Khanna, whose videos I could watch and teach myself, learn about how to work out, etc. So October 2020, I joined the gym. And did the bro split thing and all. कुछ strength नहीं बढ़ा. Max I used to hit was mid 10 kgs. I had a pair of dumbbells 10 kgs at home. फिर भी तो उससे करता था, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना. Then cases started rising again. Fast forward to January of 2021. I was height बढ़ा थोड़ा, but I was still fat. Okay. तो तभी आई वॉज लाइक 72 या 73, 74 के आसपास था. कुछ इतना भी कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं था. एंड देन इन January of 2021 इज व्हेन आई थॉट ओके आई शुड रियली डू समथिंग अबाउट इट, स्टार्ट वर्किंग आउट प्रॉपरली, अच्छे से. विच वॉज अ ईयर अगो राइट. अभी January 2022 है. या ओके, सो अ ईयर अगो आई सेड ओके आई रियली हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट प्रॉपरली. सो I had those dumbbells, gym तो बंद था. Then मैंने घर पे ऐसे कुछ किया. First started with skipping a bit. Then I used to go for runs. मैं cycling तो पहले से करता था. I used to cycle 20 kilometers every day. But I did not know what calorie deficit was. मुझे मालूम ही नहीं था calorie deficit क्या है. कभी ना पढ़ा, कभी ना सुना. What is a calorie deficit? तो फिर 2 महीना वर्कआउट किया. Still no change in my body. No change. मतलब मेन इज डाइट. ओके, 70% डाइट, 30% वर्कआउट.
now my diet is on point. Currently I'm lean bulking. I'm at 68 kgs now. So yeah, diet was on point, or rather diet is on point now. Okay, so then मैंने सोचा कि अभी change करना पड़ेगा. So then I started skipping, and then I found out कि how I can make videos. So terrace पे workout करता था and कुछ rest नहीं लेता था. I started with my first challenge, which was skipping 2000, doing 2000 skips every day for 30 days. That is how I started. Us time I thought, okay, so I really have to make some changes in my body, don't I? So then I started researching, and then I came across this term, this calorie deficit. Before that, I had no idea what deficit was, but started with calorie deficit. And मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं खाता था. मैं प्रोटीन इंटेक वॉज डैम लो. मैंने वो टाइम एक दिन प्रोटीन इंटेक ट्रैक किया, और मेरे पूरे डाइट में I used to eat only 20 grams of protein. Currently eating 120 grams of protein. So you get it right. Of course, my dad helped me a lot too when I started. And देखो बाइसेप में मस्त दिख रहा है ना, पूरा टाइम ऐसे ही रहता है, मस्त एकदम. Okay, so yeah, protein intake. फिर थोड़ा थोड़ा मैंने वो सब रिसर्च किया, and in the month of like May, June something, I made a lot of videos. मजा आने लग गया मुझे वीडियो बनाने में. I learned what a calorie deficit was. I lost 4 kgs. Then I was at 70 kgs. Okay, only 2 kgs heavier than I am today. But वो time पे it was like all damn fat. Okay, fat था मतलब बाइसेप कुछ नहीं, ट्राइसेप कुछ नहीं. अभी तो पंप नहीं है तो छोटा दिख रहा है, but you know, मतलब if you watch my Instagram or something. Okay, so yeah, that is how I started. बहुत सीखा calorie deficit, calorie tracking, etc. Gyms reopened again, which was the best thing that happened. फिर अराउंड जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक आई वॉज इन अ जिम. वो एक है जिम, अभी नाम लूंगा नहीं. इट राइम्स विद चैविटी एंड इट इज चीज़ फालतू जोक था भाई एकदम. ओके, सो गॉट इनटू दैट जिम, वर्कड आउट अ लॉट. So yeah, उसके बाद in October I joined new gym currently, which I am in the current gym that I am in, Fitness Factory. And तो मेरा weight कम होते गया, and और veins दिख रहे हैं के इधर भी दिख रहे क्या? हाँ दिख रहे. Okay, so then in September of last year I was at the lowest weight I was ever, 63 kgs. October I was 63, 64 again. December तक I kept my weight at 64 because I tried main gaining. So मैंने पूरा weight lose कर लिया. I was ठीक ठाक fit मतलब. Yeah, I was main gaining for 3 months. At 64, 2.5 months, 3 months. I was at 64 kgs, but I saw no changes in myself when I was main gaining. थोड़ा strength बढ़ा होगा थोड़ा, but उसके अलावा there were no changes. Okay, so after seeing no changes, in Jan again I started bulking, lean bulking. Jan मतलब अभी वाला current this thing, and currently I'm at 68 kgs. 65 से 68 पे गया मैं in a month. December and Jan, in a month I am at 68 kgs. So yeah, थोड़ा साइज में भी, अभी इधर साइज क्या दिखाऊंगा, पर हाँ ये शर्ट पहले लूज होता था, अभी बराबर हो रहा है. So I'm at 68 kgs. And let's see where I go ahead. Well, now if someone were to ask me what are a few tips that I would give to someone who is trying to lose weight, first thing I would say is obviously calorie. एक second, मैं अपना tripod adjust कर लेता हूँ. The first thing I would say is obviously calorie deficit. The second thing I would say is start slow. Yeah, मतलब तुम एक दिन में if you are eating, मतलब अगर if you are fat and you are eating like 3000 calories, you won't be able to, you know, and you are burning like 2500. You won't be able to directly go down to 2200. It would be difficult for you. So start slow. थोड़े दिन में 100 calories reduce करके. Third thing, start calorie tracking. Fourth thing, drink a lot of water. Calorie tracking is damn important. Okay, drink a lot of water. Follow fitness creators, influencers like me who give you good tips. Okay, किसी को भी मत follow करना. Don't set damn high goals. जैसे मुझे 2 दिन में ड्वेन जॉनसन बनना है, ऐसे goals मत रखना. Okay, ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं. So yeah, keep watching my videos. Do follow me on Instagram at @arya_sohani. If you are interested in buying resistance bands, check out BandFit. नीचे link मिल जाएगा description में, and use code ARYA10 for 10% discount and free shipping. And yeah, that's it.
have fun with my other videos of mine. And yeah, that's it for today's video.